What is childhood? What comes to your mind when you think about childhood? Here's what comes to mind. Learning to ride a bike, climbing trees, clapping games, skipping games, crying in maths lessons, hating all maths teachers, waiting hours and hours for Sunday lunch to be ready, and then getting served last. But for some, childhood means something else. Childhood means to them agony, pain, hospitals, hope to at least survive this time, waiting for a miracle, expecting the doctor to be the saviour. This is childhood for many children who are suffering from thalassemia. The disease which requires blood transfusion in the body regularly, the transfusion which creates tiny holes in the tiny bodies of children. When they cry, when they hold hands of their mothers and telling them in their eyes that it is painful. तो मेरा नाम सदफ है और ये मेरी बेटी है आज़का। इसको थैलेसीमिया मेजर है और ये जब 8 मंथ की थी तब ये डायग्नोज़ हुआ। पहले ये बिल्कुल पहले हमें पता नहीं चला, इसका पेल कलर होना शुरू हुआ तो तब हमें पता चला। जब 8 मंथ की थी तब हमने देखा कि तब हमें डॉक्टर से बताया कि इसको आप जो है चेक करवाएं। जब हमने चेक करवाया तो हमारे पास तब थैलेसीमिया मेजर इसको डायग्नोज़ हुआ। तब से हम इसे यहाँ ला रहे हैं और इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। और यह होता है कि बाज़ औक़ात हमें ब्लड नहीं मिलता तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। और इसके अलावा ये होता है कि जब भी हम इसको यहाँ लाते हैं तो एक दर्द से गुज़रते हैं, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जब आप शादी करें तो ज़रूर ये टेस्ट करवाएं ताकि आप अपने बच्चे को सेव कर सकें। And why do they have to go through this again and again? The disease which requires blood to come out of their bodies, and fresh blood needs to replace the old one. हमारे यहाँ जब छोटा बच्चा आता है तो उसको महीने में 1 या 2 दफ़ा ब्लड लगता है। जो वो बड़े होते जाते हैं इनकी ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, फिर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लगता है और डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन कैसी है। कई दफ़ा तो 1 हफ़्ते के बाद भी लगता है, महीने में 4 दफ़ा भी लग सकता है बड़े बच्चों को, जब उनकी स्प्लीन वगैरह बढ़ जाए। तो यूजुअली ये पेशेंट्स अगर इनके पास पैसे हों भी तो थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदे को गरीब कर देता है, क्योंकि इसकी एक तो ब्लड की रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं होती है। आपको लोगों से मांगना पड़ता है, लोग साथ नहीं देते हैं, कहीं से ब्लड मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो आपको ख़रीदना पड़ता है। फिर उसके बाद इसकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें आयरन, जब हम ब्लड उनको देते हैं तो उनका आयरन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड ब्रेक डाउन होता है तो वो आयरन रिलीज़ करता है। नॉर्मली बॉडी में इतना आयरन नहीं होता। The risk still exists. If they do not remove excess iron accumulating on their heart and in their vessels, this can be fatal, so they have to remove it too. And this is another procedure full of agony for the child itself and for their parents. So the agony is twofold. ये मेरी बेटी मलाइका मारेगी, इसको 6 माह की थी तब से इसको ब्लड लग रहेगा। बस ये तब से इसकी बीमारी के बारे में पता चला, क्योंकि मेजर थैलेसीमिया है। अब ये 11 साल की होगी कि इसको महीने में 2 दफ़ा ब्लड लगता है। अब ये बीमारी इतनी है कि माँ से पूछे कि इसको कैसे बीमारी लगी है कि अब ये क्लास 3 में है कि अब ये कुछ बनना चाहती है कि पढ़ना चाहती है आगे। मेरी दूसरी बेटी जो है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है कि इसे भी बहुत शौक़ है पढ़ने का। बस और क्या कह सकती हूँ इसके बारे में। बस अल्लाह ताला ऐसी बीमारी किसी को भी ना दे, हर बच्चे तंदुरुस्त रहे। Look in the eyes of these children.
They do not know if they will live or not, but they want to live. They want to dream about things normal children do. They want to go to school. They want to learn how to use the iPad. They want to become active members of the community, but they cannot. Why? Because they have to wait for their next appointment. ये बेटी है मेरी, एमन शाह इसका नाम है। ये तकरीबन 3 महीने की थी जब इसको डिग्नोज़ हुआ है कि इसको थैलेसीमिया मेजर है। तो उस वक्त से अब तक मकसद है कि इसकी माशाल्लाह उम्र हो गई 8 साल। तो इसको हम ब्लड लगवा रहे हैं। पहले तो 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद मकसद है कि 1 दफ़ा लगता था ब्लड इसको, लेकिन अब ये है कि महीने में 2 दफ़ा भी यहाँ पे आना पड़ता है। और इसका जो ब्लड लगाने का जो अमल है या और इसकी ट्रीटमेंट जो है, डिस्फ्रॉल वगैरह जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, वो बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है। हमें भी मकसद है कि दिल से दुख होता है इसका कि इसको इतनी तकलीफ़ होती है। रोज़ का मकसद है कि इंजेक्शन भी एक लगाना पड़ता है इसको, उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन चलो अल्लाह ताला की तरफ से जो भी है वो है, लेकिन इसकी कोशिश तो हम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे इसको, अल्लाह ताला इसको सेहत करे। और बाकी बच्चों को भी मकसद है कि इसी तरह ही है। अब तो माशाल्लाह से ये स्कूल वगैरह भी जा रही है, स्कूल भी पढ़ती है अपने, और बस दुआ सब लोग करें ताकि इसको अल्लाह ताला सेहत दे तमाम बच्चों को। They have to worry for their mother who cries whenever she looks at them. They have to worry about their fathers who work extra hours day and night to save some money, not for their needs, but to save their children's lives for the next 1 month. इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनको पहले तो आपकी दुआएं चाहिए, और दुआओं के साथ साथ आपकी जनरस कंट्रीब्यूशंस भी। आपके दिए हुए से इन बच्चों की ज़िंदगियों में तब्दीली हम लाएंगे, और आपकी दुआओं के साथ इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। The number of thalassemia patients has surpassed 2.5 million in the country, and every year at least 6,000 children are falling prey of this killer disease. Owing to lack of workable arrangements at government level in terms of blood supply, the patients have to face problems in blood transfusion every month. Blood transfusion, the only hope for these children to live. Guys, seeing a mother here, words can't explain the feelings and emotions of every mother seeing their children going through this killer disease. This is a mother who has travelled miles to come to this centre here to look after a child. Only those of you who have children or are going to be parents know the impact that diseases and illnesses can have on the family at large. अम्मा जी, इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। हर बच्चा इधर हमें अपने आंटी आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। आंटी इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ खैर करेगा। आप सिर्फ अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा इंशाल्लाह। हमारा ताउन सब बच्चों के साथ इधर रहना, और इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होकर ये जो इलनेस है इंशाल्लाह इसको फ़ाइट करेंगे। बच्चों को जो तकलीफ़ होती है वो तो अपनी जगह है उसका, लेकिन जो दुख, जो दर्द बच्चे के वालिदैन महसूस करते हैं, उसके जो अल्फाज हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे आप देख सकते हैं, ये भी हमारी मोहतरमा किसी की वालदा हैं। इधर आकर सिर्फ वालदा को उस दर्द का पता होता है, या अल्लाह पाक को, कि क्या गुज़रती है फ़ैमिलियों पे जब आपकी औलाद ऐसी जो मूज़ी बीमारियां हैं उससे गुज़रती है। हमारा ताउन, हमारी पूरी टीम का ताउन सब बच्चों के साथ है। अल्लाह पाक हम सब को एक दूसरे का दर्द महसूस करने की तौफीक अता करे। This disease is spreading fast in the country, and the number of patients of this disease has swelled to over 2.5 million, while the number of registered patients stands at 125,000 only. This means over 2.3 million patients, including children, either die with this disease or never get to know they could have been saved.
Fact of the matter is that despite having agonizing reports and number of fatalities, thalassemia has never been part of the national health program of the country. Children are dying every day due to lack of either financial arrangements or lack of facilities, and this is where Creating Smiles have decided to stand up and work for the children with blood cancer and thalassemia. We are working to bring back smiles on the children's faces, the smile which is not there, but with the support of people like yourselves, we can, because all lives matter. Today we have come here and given these beautiful children a beautiful gift of hope. These children are waiting for our support and our generous contributions so that they can receive fresh blood transfusions to fight to combat this killer disease of thalassemia. We urge all of you beautiful viewers out there to come forward and support these children through your humble prayers and your generous contributions. You support us so we can selflessly come out here and support these beautiful children waiting your generous help. क्या आप चाहते हैं मैं और मेरे जैसे बच्चे सेहतमंद हो जाएं तो आप हमारी मदद कीजिए। Please donate generously